watching the News Hour at 9 direct. Joining me tonight on the News Hour is the self-made man of Indian corporate industry, Mr. Sunil Bharti Mittal, the man behind the successful brand Airtel, setting up telecom networks across the country and now diversifying into several other businesses. Congratulations, Mr. Sunil Mittal, for the knighthood that has been bestowed upon you, the highest honor that the UK government could have bestowed on a foreign civilian. How does it actually feel to be now referred formally to as Sir Sunil Mittal? No, I'm, as you can imagine, delighted receiving this rare honor. It is a delight to see the British government, His Majesty the King, recognized the work that has been done to build Indo-UK relationship. I think today India is at a point where it is being celebrated globally. So this award to me, recognition, is as much a recognition of India and rising power of India as it is for my contribution, a small contribution in this area. You have taken over several businesses in the UK in trouble. Your company Airtel in Africa is listed on the stock exchanges in the UK. You're part of the CEO's business forums, trade as well as investment relations between India and UK have continued to grow. You played a pivotal role in all of this. How do you see this going forward, and how do you see India, the calling card of India today, vis-a-vis what we've seen in the past? Well, as I said, India's position is very dramatically different from where it was. And I've been on this journey for, I would say, nearly 20 years. I've been part of the engagement process of the two countries. And from a position of, weakness to a position of an equal position to now where India deals with the globe from a position of strength, I would say. We have come a long way. India and UK have been very good partners in business and trade. The business volume, the investment volumes have been growing. There have been fantastic investments on both sides. Tata's investments in the UK, Wipro, Infosys, Tech Mahindra, HCL, all the IT companies having large presence here. The Ruyas are in the refinery. My own company has big investments here in the not only just satellite space, but also we are having our networks up in the Channel Islands, in Jersey and Guernsey. We also have hotels here in the UK, our hospitality arm. So there's a lot of engagements here with the UK. But what does it mean for today's India? It's a large market. It's a 1.5 billion people. UK needs scale after having come out of Europe after the Brexit. And they have wonderful technologies, but they don't have the scale. So the complementarity between India and UK is really very high now. And I'm looking forward to a very deep and enhanced relationship that India and UK can enter into. Mr. Sunil Mittal, I've been seeing your growth over the last 30 years. I think it was 1995 when we first met, me as the telecom reporter and you as the first generation entrepreneur. Today, the word startups is just so fashionable, but you were the original Desi boy with the Desi startup and a telecom license and dreams in your eyes. How do you see the last 30 years, your first fixed line license, which came up in Indore, which you launched, to Sunil Mittal today? How have you grown? What are the stories that you remember at a time when you're now going to be referred as Sir Sunil? Well, Navika, it's true. You have been on this journey long enough. You have watched every step of the way. And it's been an exhilarating journey, to say the least. Ups and downs, lots of big battles, lots of bruises along the way. I would say at times even near-death experiences for the company. But I think the God has been very kind. There's been a lot of goodwill out there for the company, personally, for me as well.
and it has kept us in good stead. One thing which has remained common is my calm approach towards my work. As you know, work is my place where I get most satisfaction. I'm a working person. From day one till now, what has changed? We are now second largest mobile operator in the world with 550 million customers. We are recognized around the globe. We have become a strong, telecom player globally, not only just in India, but in Sri Lanka, Bangladesh, Africa. So it's been a great journey. One of the highlights of the journey has been learning along the way. I don't come from the background of business, as you know. My family was not in business, so learning business, learning technology, getting into a space where deep pockets were required, and I had no pockets, forget having deep pockets. So just sort of scrounging, managing from one day to another, then month to month, and year to year, to a place today when you have a company which is now celebrated, $80 billion market cap, and now seen as a robust financial, company in the country. It represents, to my mind, the best values of governance, of talent management, of empowerment of people. And I say Airtel is not really just my company. It is a national asset which belongs to the entire country. Mr. Sunil Mittal, some of the stories that one has read about you, some we've heard, but our viewers probably need to hear it from you firsthand. Is it really true that before you started your first telecom license, you actually used to be on a two-wheeler, on a scooter? Is that actually true? Oh, yeah. I mean, that's where you start. I mean, you start on a bicycle, then you get to a scooter. And that was my go-to ride. And in my first 2-3 attempts, when I started to manufacture bicycle parts, that was the scooter. Then I was in stainless steel products, still a scooter. Some hosiery unit which I had put up in Ludhiana was still a scooter. And then in Bombay, from scooter, I was on the top of trucks, getting my stuff from the ports to the markets in, Paiduni and Abdul Rahman Street. And I have done it the hard way. Long train journeys from all the way from Delhi to Bombay, Bombay to Delhi, in the same day, evening to Calcutta. So it's been quite a ride. One day, I hope I'll get the enthusiasm to write about it. There's a lot to talk about. There's been some incredible experiences on this journey. बहुत से लोग सोचते हैं क्या इंडिया में ऐसी सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं, क्या हुआ करती थी, स्टार्टअप वर्ड आने से पहले भी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज कभी हुई थी. आज यंगस्टर्स को आप क्या कहें? देखिए, आप एक ऐसे देश में हैं जहां आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं. जब मैंने शुरुआत की थी तो उस वक्त पैसा नहीं मिलता था. बैंक आपको कोई लेंडिंग नहीं करते थे जब तक आपके पास एसेट नहीं थे. आज तो कोई आइडिया लेके अगर आप चले जाएं तो दुनिया आपको देखती है, दुनिया आपके पीछे पैसा लगाने को तैयार है. और आज इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, उसके बेसिस पे अगर आपके पास कोई सपना है, कोई आइडिया है, उससे आप बहुत ही आगे निकल सकते हैं. मेहनत करनी जरूरी है. मेरी एक ही एडवाइस रहती है सबको कि अगर आपको ये लग्जरी है कि आप उस एरिया में जा सकें जिसमें आपको मजा आता है, खुशी मिलती है, जब आप अपने काम पे जाए सुबह तो एक जोश आता है, अगर आप वो काम पकड़ लें तो सक्सेस तो इंडिया में बिल्कुल एब्सोल्यूट पक्का है. आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपका दिल नहीं लगता हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो इन माय केस थैंकफुली कोई चॉइस ही नहीं थी. ना मैं कोई डॉक्टरी की थी, ना कोई वकालत की थी, ना कोई इंजीनियरिंग थी. तो मेरे पास तो कुछ काम ही करना था. एंटरप्रेन्योरशिप ही मेरे सामने थी. और लुधियाना में ऑलमोस्ट सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ मेड हैं, तो एक इंस्पिरेशन भी थी. माय फादर वाज इन पॉलिटिक्स, तो बिजनेस वाज नॉट इन आवर फैमिली. So that was one route one could have taken, but I decided to be an entrepreneur, and it's been a good journey. तो अब बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इतना बड़ा एम्पायर और यूके की रिकग्निशन, पद्म भूषण आप पहले से पा चुके हैं भारत में.
लगता है कि कभी पॉलिटिक्स की तरफ कुछ जाएंगे? इलेक्शन का माहौल भी है देश में। नहीं, वो ट्रेन बहुत पहले छूट गई थी। बहुत जब 40-45 साल की उम्र में होते थे तो उस वक्त लगता था कभी इस तरफ देखेंगे, बट नहीं। अब मैं अपना पॉलिटिक्स करता हूँ फ्रॉम ग्लोबल थिंक टैंक्स। 12 साल में कार्नेगी एंडाउमेंट वाशिंगटन के बोर्ड पे रहा, वहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे बातचीत, वहाँ पे वेरियस जियो पोलिटिकल इश्यूज देखे। अब मैं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, जो एक बहुत अगेन बड़ा थिंक टैंक है न्यूयॉर्क में, उसके बोर्ड पे सर्व करता हूँ। और आईसीसी चेयरमैन रहा हूँ, जीएसएमए चेयरमैन रहा हूँ, मैं अपना सीआई का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो अपना पॉलिटिक्स अब मैं इकोनॉमिक्स से करता हूँ, और वहां से जो हमें मिलता है कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यूके पे फोकस करिए, या स्पेशल जो टेक्नोलॉजी जो हमें यूएस का आईसेट प्रोग्राम है उसमें फोकस करिए, स्पेस टेक्नोलॉजी पे करिए, तो वो काम करते हैं। देखते हैं कि आई थिंक एक सम political matters are also dealt by business people. सब नहीं करते, सबको ये शायद शौक नहीं होता है। हम पॉलिटिकल परिवार से निकले हैं, तो एक जज्बा है कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं बनाना, कुछ साथ साथ देश के लिए करना है। और आज ये जो यूके की रिकॉग्निशन हिज मैजेस्टी किंग से मिली है, वो एक बताता आपको कि आप सिर्फ बिजनेस की तरह मत करिए कि आप पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ देश का भी जो एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाइए। उसके लिए मैंने हमेशा काम किया है। जब न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस से, मैं करीब 3-4 बार यूएस गया बैक चैनल में सबसे बातचीत करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो आई वुड से हर बिजनेसमैन का, स्पेशली अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपको एक पोजीशन मिली है जहां भी दुनिया में आपकी रिकॉग्निशन है, तो उसको यूज करना चाहिए गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई चीजें गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, जिसके लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। वो काम कुछ चंद बिजनेसमैनों को करना चाहिए। Sunil Mittal ji, getting this honor, the knighthood, what was your first reaction? And do these titles and do these recognitions mean something special? दिल में पहला क्या ख्याल आता है? well, देखिए, जैसे आपने बोला 2007 में मेरे को पद्म भूषण मिला था। बहुत यंग था उस वक्त मैं, 17 साल इस बात को हो गया, 18 साल। सो अब ये जब भी कोई ऐसा रिकॉग्निशन आता है तो अच्छा लगता है बहुत। इस पर हजारों मैसेजेस आए हैं, मैं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया अपने मैसेजेस को अभी तक। और ऑब्वियसली इससे इस रिकॉग्निशन से एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इस तरह के अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर्स किसी कंट्री में होते हैं, और वो भी देश से बाहर विदेश में, उसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं। First Indian to get it. Yeah, but Ratan Tata has got it in the past from the Queen. I'm the first Indian to get it from the King. And जो लिस्ट में 2-3 नाम हैं, बहुत ख्याति वाले नाम हैं, बहुत इंस्पिरेशनल नाम है, तो उसमें जुड़ना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। बट ये यहाँ से काम रुकता नहीं है, यहाँ से काम और आगे बढ़ता है और काम करना। Well, on that note, thank you very much, Sir Sunil Mittal. Thank you very much for joining us, and many congratulations from Times Network and of course from the millions of viewers who are watching you tonight and feeling proud for this honor that's not only been bestowed on you but also on this country called India, Bharat as we call it. Thank you, Mr. Mittal.